नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाखिल। आज मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम रेडियल बेसिस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेडियल बेसिस फंक्शन और न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RBF। जो हम पर्टिकुलर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर इसको अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम के लिए हम यूज में लेते हैं, जिसके अंदर इसका एक पर्टिकुलर 3 लेयर्स होता है, आर्किटेक्चर होता है, यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, फास्ट लर्निंग इसकी स्पीड्स होती है। ये सारे फंक्शनल एक पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। इनके रेडियल फंक्शंस को जब हम काम करते हैं तो इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है, एक आउटपुट लेयर होती है। इन सारी चीज़ों के थ्रू हम पर्टिकुलर इसकी फंक्शनलिटी को देखते हैं, जो डिफरेंट मोस्ट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के साथ में ये काम में आती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन RBF नेटवर्क आर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क used for the function approximation problems. RBF network differ from other neural network in their 3-layer architectures. Number 1, universal approximation and faster learning speed. In this article, we will describe radial basis function neural network, its working architecture, and use as a nonlinear classifiers. आगे हम देखते हैं व्हाट आर रेडियल बेसिस फंक्शन। रेडियल बेसिस फंक्शन होता क्या है? रेडियल बेसिस फंक्शन आर ए स्पेशल क्लास ऑफ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स consisting of 3 layers: input layer, hidden layer, and output layer. This is the fundamentally different from the most neural network architecture, which are composed of many layers and bring about the non-linearly by the recurrently applying non-linear activation functions. The input layer recursive input data and passes it into a hidden layer, where the computation occurs. The hidden layer of the radial basis function neural network is the most powerful and very different from the most neural network. The output layer is designed for the prediction tasks like classification or regression task. How do RBF network work? किस तरीके से RBF नेटवर्क काम करता है? RBF neural network are conceptually similar to k nearest neighbor KNN. RBF जो रेडियल बेसिस फंक्शन होता है वो k नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम करता है, मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ मॉड्यूल्स इज strictly different. The fundamental idea of radial basis function is that an item's predicted target value is likely to be the same as other items which close value of the predictor variables. An RBF network places one or many RBF neurons in the space described by the predictor variables. The space has the multiple dimensions corresponding to the number of predictors variables present. We calculate the Euclidean distance from the evaluated points to the center of each neurons. A radial basis function, also known as the kernel functions, is applied to the distance to calculate every neuron's weight influence. The name of the radial basis function comes from the radius distance, which is the argument to the function. Weighted RBF distance, the greater distance of the neurons from the pointing evaluated, the less influence weighted it has. अब आगे हम इसी चीज़ की बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है? रेडियल फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क, एवरीथिंग यू नीड टू नो लाइक रेडियल बेसिस फंक्शन network are a particular type of
A radial basis function is a real value function, the value of which depends only on the distance from the origins. And although we use the various type of radial basis function, the gasoline function is the most common. And next होता है हमारा in the instance of more than one predictor variable, the radial basis functions neural network has the same number of dimensions as there are variables. If three neurons are in the space with two predictor variables, we can predict the value from the RBF functions. We can calculate the best predicted value for the new point by adding the output value of the RBF function multiplied by the weighted processed for each neurons. नेक्स्ट होता है द रेडियल बेसिस फंक्शन फ्रॉम ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटर and a radius, also called the spread. The radius may vary between different neurons. In DTREG generated RBF networks, each dimension radius can differ, and as the spread grows larger, neurons at a distance from the point have more influence. अब इसके बारे में आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर होता है आरबीएफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। द टिपिकल आर्किटेक्चर ऑफ रेडियल बेसिस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड सबमिशन लेयर। इसमें होता है इनपुट लेयर। द इनपुट लेयर कंसिस्ट ऑफ वन न्यूरॉन फॉर एवरी प्रेडिक्टर वेरिएबल्स। The input neurons pass the value to each neuron in the hidden layer, like n-1 neurons are used for categorical value, where n denotes the number of categories. The range of value is standardized by subtracting the median and dividing by the interquartic range. दूसरे थे हिडन लेयर। हिडन लेयर के अंदर क्या होता है कि प्रोसेस होती है, ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग होती है। द हिडन लेयर कंटेन्स ए वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, द आइडियल नंबर डिटरमाइंड बाय द ट्रेनिंग प्रोसेस। ईच न्यूरॉन कंपेरिजन्स ए रेडियल बेसिस फंक्शन सेंट्रोइड ऑन ए पॉइंट। द नंबर ऑफ डायमेंशन coincident with the number of predicted variable. The radius or spread of the RBF function may vary for each dimensions. Next होता है when an x vector of the input value is fed from the input layer, a hidden neurons calculate the equivalent distance between the test case and the neuron's center point. It then applies the kernel functions using the spread value. The resulting value gets fed into the summarization layers. अब इसके बारे में आगे जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक होता है लास्ट आउटपुट लेयर्स और समरेशन लेयर्स। आउटपुट लेयर क्या काम करता है? जब हम द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द हिडन लेयर is multiplied by the weighted related to the neurons and passed the summation. Here the weighted value are added up and sum is passed as the network output. Classification problems have one output per target category, the value being the probability that the case evaluated has the category. Input vector, it is the n-dimension vector that you are attempting to classify. The whole input vector is presented to each of the RBF neurons. दूसरी चीज होती है every RBF neurons stores a prototype vector also known as the neuron center
from the amongst the vector of the training set. And RBF neurons compares the input vector with its prototype and outputs a value between 0 and 1 as a measure of similarity. If an input is the same as the prototype, and neuron's output will be 1. As the input and prototype difference grows, the output falls exponentially towards 0. The shape of the response by the RBF neurons as well curve. The response value is also called the activation value. And output nodes. What is the output nodes? The network output company comprise a set of nodes. For each category, you will trying to classify. Each output node computes a score for the concerned category. Generally, we take classification decision by assigning the input to the category with the highest score. The score is calculated based on the weighted sum of the activation value from all RBF neurons. It usually gives a positive weight to the RBF neuron belong to its category and a negative weight to other. Each output node has to its own weighted set of weighted. तो दोस्तों ये आपका होता है रेडियल बेसिस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क। इसके अंदर हम बात करते हैं CNN की सिमिलर होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक और नया लेक्चर लेके आने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।